Hello. So the next topic to be discussed is mode of communication. Let us first understand what is this modes of communication, right? You all know that in a system there are different devices interconnected with each other, and every device tries to communicate with every other device, isn't it? तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है दो डिवाइसेस के बीच में, ये कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट मोड्स है, राइट? डिपेंडिंग ऑन विच मोड इट इज़ यूजिंग फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप, देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. Now there are several modes, but in detail we will discuss the simplex mode, half duplex mode and full duplex mode. So the first mode of communication, or we can say basic mode of communication, is the simplex mode of communication, right? Now what happens in simplex mode? In a system, you can observe this diagram. There are two devices. This is device 1 and here it is device 2, right? The device 1 is acting as a sender and the device 2 is behaving as a receiver. What does this means? First of all, simplex mode means what? The communication will take place in only one direction. The word which you need to remember is unidirectional. That means what? Communication will be only in one direction. You can see the arrow, right? The arrow is not two direction. The arrow is only one direction. Means what happens? One device will always act as a sender and the other device will always act as a receiver or at all times, right? It won't happen that device 2 will start sending and device 1 will start receiving. No. So simplex mode means what? Communication takes place in only one single direction, right? Two-way communication is not allowed in simplex mode. So this is what the line shown over here is nothing but the channel, right? So the capacity of this channel is entirely used by the sender to transmit the information to the receiver, right? What I said, I repeat, ये चैनल की जो कैपेसिटी होती है, राइट? ये चैनल की जो कैपेसिटी होती है वो पूरी यूज़ की जाती है ये सेंडर से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए रिसीवर तक. Okay, so this is the simple mode of communication called as simplex mode. Okay, so you can just go through this slide in detail to understand the rest. If we consider an example, if we talk about an example, the example we can consider over here is radio broadcast. Okay, रेडियो ब्रॉडकास्ट मतलब क्या? आप हम सब रेडियो सुनते हैं, राइट? सो इन रेडियो व्हाट हैपन्स? रेडियो ब्रॉडकास्ट में क्या होता है? रेडियो स्टेशन इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है, राइट? बट वी कैन नॉट ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन बैक टू द रेडियो स्टेशंस. ओके, मतलब क्या? इन्फॉर्मेशन सिर्फ वन डायरेक्शन है. इन्फॉर्मेशन इज ओनली वन डायरेक्शन फ्रॉम रेडियो स्टेशन टिल द यूजर्स, मतलब हम लोग, पब्लिक, right? But from public you cannot transmit back the information to radio station, right? So this is the communication mode which is called as simplex mode. Okay, now next we will talk about the advantages and disadvantages. Okay, अब हर everything will have an advantage and a disadvantage, right? So simplex mode के कुछ advantage है, जैसे कि वो simple और easiest mode है, right? easy है like assemble करने के लिए. Okay, next thing, एक device में एक सिस्टम में दो डिवाइस में अगर बस एक डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो रहा है तो ये दोनों के बीच में कुछ प्रॉपर लाइक देयर इज़ नो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, राइट? कोऑर्डिनेशन की कुछ ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर बार ये सेंड करने वाला है डिवाइस ए एंड ये डिवाइस भी रिसीव करने वाला है. सो इवन दो देयर इज़ नो coordination, it is okay. And the third advantage, so we discussed this point, that no need for communication, and the next point is it is cost effective. But obviously ये simple है implement करने के लिए, तो उसका cost जो है वो भी reduced है rather than the other two mode of communication.
एंड नाउ इफ वी डिस्कस द डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज में क्या होता है, अगर ये डिवाइस बी को कुछ retransmit करना है डिवाइस ए को, then this thing is not possible in this simplex mode. So this is the first disadvantage of simplex mode of communication. Next, ए ने कुछ तो ट्रांसमिट किया है बी को, राइट. डिवाइस ए हैज़ ट्रांसमिटेड फ्यू इंफॉर्मेशन टू डिवाइस बी, but there is no way to check whether the transmitted data is received correctly or no, right? क्योंकि B कुछ पीछे फिर से A को send नहीं कर सकता है, तो A को like there is no way to know whether the transmitted data is correct, received correctly or no. Okay, so this is the second disadvantage of simplex mode of communication. And the last one is it is not suitable for applications that requires bidirectional communication. जैसे मैंने कहा, जहाँ B को भी A को कुछ ट्रांसमिट करना है, ऐसे अगर कुछ एप्लीकेशंस है तो वहाँ पे हम ये सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ नहीं कर सकते हैं. सो दिस So these are the few advantages and disadvantages of simplex mode of communication. अब ये जो disadvantages है ये overcome करने के लिए next mode of communication जो आता है that is half duplex mode, right? So in half duplex क्या होता है, we will directly discuss this picture over here. You can observe the picture on to the right side of your screen. What is happening over here? There are again two devices, device A and device B. यहाँ पे भी दो डिवाइस है, डिवाइस ए है, डिवाइस बी है. ओके, यर इन द फर्स्ट केस डिवाइस ए क्या कर रहा है, सेंड. डिवाइस ए सेंड कर रहा है, डिवाइस बी रिसीव कर रहा है. यू कैन ऑब्जर्व द एरो, राइट. द एरो इज गिवन इन दिस डायरेक्शन, मीन्स ए इज सेंडिंग एंड बी इज रिसीविंग. बट यू कैन ऑब्जर्व डाउन इन द पिक्चर द एरो इज ऑल्सो इन द अपोजिट डायरेक्शन. मतलब एक ऐसा केस है जहाँ पे बी सेंड कर रहा है, ए रिसीव कर रहा है. मतलब जो दोनों डिवाइस है ए एंड बी, दोनों भी सेंड कर सकते हैं एंड रिसीव कर सकते हैं. हाफ ड्यूप्लेक्स में बोथ आर अलाउड टू सेंड एंड रिसीव, बट नॉट साइमल्टेनियसली. यू नीड टू रिमेंबर दिस वर्ड. ओके, द कम्युनिकेशन इज बाई डायरेक्शनल. जो अपना सिंप्लेक्स मोड था वहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे था, यूनिडायरेक्शनल था. यहाँ पे कम्युनिकेशन बाई डायरेक्शनल है. मतलब ए एंड बी बोथ आर अलाउड टू सेंड एंड रिसीव, बट अगेन नॉट साइमल्टेनियसली. मीन्स व्हेन ए इज सेंडिंग, बी कैन नॉट send anything, B can just receive, and when B is sending, A can just receive, A can't send anything. Okay, so now if we talk about an example, एक example लेके we will try to understand. Take an example of a walkie talkie. ठीक है, आप सबको मालूम है वॉकी टॉकी कैसे काम करता है. वॉकी टॉकी हैज़ अ बटन ऑन इट, राइट. व्हेन वन पर्सन इज प्रेसिंग दिस बटन एंड देन द अदर विल बी एबल टू रिसीव समथिंग. मतलब जब तक ये बटन रिलीज नहीं होता है तब तक सेकेंड पर्सन कुछ ट्रांसमिट नहीं कर सकता है. ओके, सो you can just go through this example in detail to understand this half duplex mode. Okay, so what you will remember, half duplex is nothing but a bidirectional communication, but not simultaneously. One will transmit at a time and the other will only receive till that time. Okay, again there are few advantages and disadvantages of half duplex and full duplex. Let us discuss those. फर्स्ट, हाफ ड्यूप्लेक्स का एडवांटेज क्या है कि ये अगेन ये भी सिंपल इम्प्लीमेंट करने के लिए एंड हेंस लोअर कॉस्ट एंड ईजियर मेंटेनेंस. ओके, ये बेसिक अपना एडवांटेज है. सेकेंड, अब एक टाइम पे एक ही रिसोर्स यूज़ हो रहा है, लाइक वन इज़ ट्रांसमिटिंग तो सेकेंड इज़ ओनली रिसीविंग. ओके, सो यू विल रिक्वायर fewer resources. Okay, and the third one is it is suited where real it is well suited for applications where real-time feedback or continuous bidirectional communication isn't necessary. Okay, again there are few disadvantages of half duplex. First disadvantage मतलब क्या है, अगर real time communication हम कर रहे हैं, okay, रियल टाइम पे अगर मुझे एट ए टाइम ट्रांसमिट रिसीव दोनों करना है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल यूजिंग half duplex. This is the disadvantage of half duplex mode of communication. Second,
proper coordination and synchronization between transmitting and receiving devices is necessary, right? अगर एक डिवाइस, दो डिवाइस है, डिवाइस ए एंड बी, ए एक बार ट्रांसमिट करने वाला है, देन बी रिसीव करके अगेन ट्रांसमिट करने वाला है, तो ये दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है या सिंक्रोनाइजेशन है, दैट नीड्स टू बी इन अ वेरी efficient, or you can say proper way for efficient data exchange. Okay, and the third disadvantage of half duplexes, थर्ड डिसएडवांटेज अगेन वही है जहाँ रियल टाइम एप्लीकेशंस और रियल टाइम रिस्पॉन्स की ज़रूरत है, लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंस. वीडियो कॉन्फ्रेंस में कैसे बोथ कैन कम्युनिकेट एट अ टाइम, ऐसे नहीं कि अगर पहले बात कर रहे हैं तो दूसरा बात नहीं कर सकता है, राइट? और लेट इट बी अ वॉइस कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ऐसे अगर है तो वहाँ पे आप हाफ ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ नहीं कर सकते हो. तो अगेन ये डिसएडवांटेज ओवरकम करने के लिए थर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन आता है, दैट इज़ फुल ड्यूप्लेक्स. फुल ड्यूप्लेक्स में क्या है, बोथ द डिवाइसेस, दिस इज डिवाइस ए एंड दिस इज डिवाइस बी. ओके, यू कैन ऑब्जर्व द एरो ओवर हियर, राइट? यही डिवाइस ट्रांसमिट भी कर रहा है एट ए टाइम, यही डिवाइस रिसीव भी कर रहा है, राइट? मतलब इट इज़ अगेन अ बाई डायरेक्शनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, बट it can occur concurrently. मतलब at the same time A can transmit as well as A can receive at the same time. Okay, you are understanding the difference. जो हाफ ड्यूप्लेक्स था उसमें एट ए टाइम एक ही कर सकते हो आप, या तो ट्रांसमिट कर सकते हो डेटा या फिर रिसीव कर सकते हो, isn't it? बट ये जो डिसएडवांटेज है ये ओवरकम किया है फुल ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन में. फुल ड्यूप्लेक्स में आप एट ए टाइम ट्रांसमिट भी कर सकते हो एंड डेटा को रिसीव भी कर सकते हो, isn't it? अब ये जो चैनल है, ये हमारा जो चैनल है, ये ट्रांसमिट भी करेगा, ये रिसीव भी करेगा. ओके, तो ये कैसे होता है, या तो ये चैनल का शेयरिंग होता है. ओके, यू कैन रीड ओवर हियर, आइदर द लिंक मस्ट कंटेन फिजिकली सेपरेट ट्रांसमिशन पाथ, वन फॉर सेंडिंग एंड अदर फॉर रिसीविंग. मतलब ये जो चैनल्स है ये दो सेपरेट लिंक होने चाहिए, ट्रांसमिटिंग के लिए अलग एंड रिसीविंग के लिए अलग, या फिर यही चैनल को, ये चैनल की जो कैपेसिटी है उसे डिवाइड किया जाता है, हाफ फॉर ट्रांसमिटिंग एंड हाफ फॉर रिसीविंग. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फुल ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन. Again, there are few advantages and full disadvantages of full duplex. So if we talk about advantage, so it is obviously ideal for real time applications such as video. जो भी disadvantage थे full half duplex में, उसे overcome किया है हमारे full duplex mode of communication में. So ideal for real time है. Next, efficient mode of communication, as transmission and reception both are done simultaneously, and it has high level of reliability and accuracy. Okay, मतलब ऑब्वियसली एट ए टाइम ट्रांसमिट भी हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है, तो वहाँ पे जो ये होगा एक्यूरेसी होगा, तो वो कैसे होगा, बहुत ज़्यादा होगा. नाउ फॉर एग्जाम्पल आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो, राइट? सो अगेन दिस इज़ ओनली वन डायरेक्शनल वे ऑफ कम्युनिकेशन. आई एम ओनली कम्युनिकेटिंग एट ए टाइम, राइट? इफ़ यू कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ मी, isn't it? सो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन, वहाँ पे क्या होगा, गैप होगा, कम्युनिकेशन गैप होगा, राइट? बट वही अगर हम वो वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, ओके, सो दैट इज़ व्हाट, अगेन टू वे कम्युनिकेशन. इमीडिएटली अगर आपको कुछ एरर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इमीडिएटली यू कैन सॉल्व योर एरर्स ओवर देयर. सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ फुल ड्यूप्लेक्स. ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट, डिसएडवांटेजेस ऑफ फुल ड्यूप्लेक्स. सो अगेन इतने सारे फैसिलिटीज़ है तो वहाँ पे क्या होता है, वो एक्सपेंसिव हो जाता है. ओके, आपके जो चैनल्स है वो चैनल की लाइक इट रिक्वायर्स टू फिजिकल सेपरेट ट्रांसमिशन पाथ. मतलब ये ही है कि एक्सपेंसिव हो जाएगा. ओके, एंड इट रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ बैंडविड्थ. Okay, so these are the advantages and disadvantages of full duplex mode of communication. So this is how we have discussed three modes of communication, that is simplex, half duplex and full duplex. Thank you.
If you have any doubts, you can just comment me down. Okay, if you need video on some other topic, you can also post it down so that I'll post the video for you people as soon as possible. Thank you.